माननीय उपसभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 34वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री कृष्ण पाल जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं। स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट बिजनेस श्री वी मुरलीधरन जी। With your permission, sir, I rise to announce that government business for the remaining part of 256th session of Rajya Sabha will be: 1. Consideration passing of the following bills as passed by Lok Sabha. 1. The Constitutional Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022 with respect to the state of Tripura. 2. The Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. 3. The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries Amendment Bill 2022. Consideration passing of the following bills after they are passed by Lok Sabha. 1. The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders, Second Amendment Bill 2022 with respect to the state of Uttar Pradesh. 2. The Criminal Procedure Identification Bill 2022. 3. The Indian Antarctic Bill 2022. Thank you. 0 आवर श्री दीपक प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित उपसभापति महोदय। हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में योगा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है सर, और प्रधानमंत्री जी की पहल पर इसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक बड़ा पहल उन्होंने किया, जिसके चलते उसकी पहचान और मजबूत हुई है सर। 2014 में यूएनओ में सर ये प्रस्ताव आया कि योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाए। दुनिया के 177 देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में योग को एक अलग और अच्छी पहचान मिली है सर। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संदर्भ में हम सब लोग जानते हैं कि घर घर में महामारी के समय में ये एक योगा ने इसको बहुत अच्छे ढंग से हर घर में योगा, और योगा के माध्यम से महामारी में लड़ाई में इसने सफलता पाई है सर योगा। और इसलिए आपके माध्यम से सर हम इसमें आग्रह करना चाहते हैं सर कि ये आज इसको जो सिखाने वाले योगा के टीचर हैं सर, योग शिक्षक हैं, और योग शिक्षक आज उनकी मांग देश और विदेश दोनों जगह पर बहुत बड़ी तेजी से बढ़ी है सर। इसलिए और साथ साथ में सर योगा बियॉन्ड द रिलीजन के माध्यम से इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, और योग शिक्षकों को सर उसकी शिक्षा बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों आम लोगों के बीच में उसको फैलाने का काम कर रहे हैं। तो योग शिक्षा को कौशल भारत मिशन में शामिल किया जाए, जिससे योग शिक्षकों को भी रोजगार के सृजन होंगे सर, और उनको भी रोजगार मिलेगा सर। इसलिए योगा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं सर। धन्यवाद। माननीय श्री जॉन ब्रिटस, इश्यू ऑफ प्राइस राइज। Sir, I am standing with mixed feelings. I am happy that we have birthdays of 3 honorable members, and also today is Odisha Day. Sir, I am sad because the life of the common man is becoming tough and much more difficult. Today is April 1st, and already the people are reeling under the price rise, and every day the petroleum price is going up. But today onwards, another unfortunate thing is going to happen. The wholesale price of drugs of more than 800 items, which are essential for our survival, is being increased by 11%. So this is unprecedented. There has been no such steep increase in the past. When the whole country is passing through a health emergency, this should have been avoided by any sensitive government. But there is a gross insensitivity that is shown to the people. Already the health budget of the people have gone haywire. And in this, almost all the essential drugs, the price of almost all the essential drugs, which are for fever, infections, heart disease, anemia, etc., even for paracetamol, sir. So last 1 week I was sick, and you also asked me where I was, and you missed my voice yesterday. I was very happy when you said that you were missing my voice.
Sir, it was because I was sick, sir. Just because I had the CHS facility, I could avail medicine. But think about the vast chunk of the population who doesn't have any social security measures or health insurance. What is their plight, sir? Sir, just look at the history. Last year, the increase was hardly 0.53%. And in 2020, it was 1.88%. Even if you look at the data of the previous years, there has been no such steep hike in the price of the essential drugs. Priyanka ji has to associate. I would deplore the action of the government, and I would urge upon the government to withdraw this steep hike. Thank you. Priyanka ji, please. थैंक यू सर सर पेट्रोल महंगा डीजल महंगा खाना बनाना महंगा खाना खाना महंगा अब दवाई भी हुई महंगी महंगाई के दर्द की दवाई भी अब है ज़रूरी सर ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू डू इज थ्रू आई अर्ज थ्रू यू सर that the cost of living is increasing every single day. Medicines are essential part of right to health that has been part of our fundamental rights. And violating that, it's in violation of the principles of our fundamental rights. Sir, I would request you and urge you that this insensitive government, which has been increasing prices every single day, should at least consider these common drugs which are useful for every single individual in this country to be able to give them some relief, sir. Thank you so much. Thank you. Srimati Santa Chhetri ji. Thank you, sir, for allowing me to speak. Sir, I would like to draw the kind attention of this august House that the Centre has told the Supreme Court that state can consider granting Hindus the minority status if the community is not in a majority within their jurisdiction. केंद्राने राज्य संघर्ष फार मोठ्या प्रमाणात Sir, निर्माण होऊ शकेल if म्हणूनच Hindus are in minority in a particular state, they should be able to establish and administer educational institution of their choice in keeping with the rights guaranteed to the minority by the Constitution as per the Centre. I humbly urge the august House to draw the kind attention of the Honorable Home Minister to urgently direct the Meghalaya government to grant minority status to Hindus via notification as per Article 29 and 30 of the Constitution of India. Thank you, sir. Thank you, Santa ji. Srimati Banna Chauhan ji. Srimati Banna Chauhan ji. Mani Shri A.D. Singh. Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I want to ask to the government through you that with the excess of use of urea, it is a great concern from the point of view of environmental issue. Only 30% of the nutrient out of the urea goes in the soil. Rest either contaminates the underground water or goes in the atmosphere. And as all of us are very well aware that crores of soil health card has been issued by the government. So government should educate the farmers not to use urea in excess, which is going to harm the soil health for the next generation. And I would urge all political parties and the government that there should be some rationalization in the price of urea, because phosphates and other things are selling at almost 27 to 30,000 rupees per ton, and urea is still selling at the same rate as from the last number of years, which leads the farmers to use it indiscriminately, which is not required, because the NPK ratio which is required is 4:2:1, and at the moment it is 6.3:2.5:1. So the government should make all efforts to educate the farmers to rationally use the fertilizers. And once the soil health card has been issued, then I urge the government that the fertilizer control order should incorporate many more grades of fertilizers, and farmers should be educated region-wise which nutrients they need in the soil. Thank you, sir. Thank you. Lieutenant General Retired Dr. D.P. Vats ji. माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं एक अहम मुद्दे की तरफ शिक्षा मंत्रालय का, सदन का और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वो है राष्ट्रीय कर्तव्य या नेशनल ड्यूटीज। मेरी प्रार्थना है कि
फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पहले राष्ट्रीय कर्तव्य या नेशनल ड्यूटीज का बोध स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को कराना चाहिए। प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा में बच्चे की 80% पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है। उस दौरान उसको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, राष्ट्रीय गान का सम्मान, राष्ट्रीय सुरक्षा, संविधान का पालन, उच्च आदर्शों का आदर, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तत्परता, समरसता, मातृत्व की भावना, क्षत्रियों भ्रातृत्व की भावना, क्षत्रियों का सम्मान और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आदि का बोध कराना चाहिए। वरना फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मिसयूज यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी इनडिसिप्लिन में बदल जाती है और राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में बदल जाता है। इसलिए पहले फंडामेंटल ड्यूटीज का बोध कराया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएं। आई मीन नेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। थैंक यू। धन्यवाद वत्स जी। माननीय श्री नीरज डांगे जी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय कि आपने मुझे ये महत्वपूर्ण मुद्दा जो है शून्यकाल में उठाने का अवसर प्रदान किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की 20 करोड़ से अधिक एडवांस वाली शाखाओं की 20% ऑडिट का प्रावधान रहा है। वह 20 करोड़ से कम एडवांसेस वाली शाखाओं में मात्र 20% शाखाओं की ऑडिट रोटेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा करवाई जाती रही है। 2020-21 की ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आरबीआई को कोरोना महामारी के हालातों के मद्देनजर करवाई जाने वाली ऑडिट के पैरामीटर में बदलाव करने का आग्रह किया था, जिसको आरबीआई ने स्वीकार करते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90% एडवांसेस की ऑडिट करने का प्रावधान कर दिया था। तदुपरांत एडवांस के 90% ऑडिट वाले प्रावधान को भी 17 मार्च 2022 को जारी परिपत्र द्वारा घटा करके 20% कर दिया गया है। इस नए प्रावधान से करीब 50% शाखाएं ऑडिट के दायरे से बाहर हो गई हैं, जो कि न सिर्फ देश के बैंकिंग व वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है और न ही देश के जमाकर्ताओं के हित में है। वर्तमान परिदृश्य में आए दिन रोज बैंक के घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रतिदिन बैंक लाइसेंस वित्तीय अनियमितताओं के कारण रद्द किए जा रहे हैं। वह जमाकर्ताओं की खून पसीने की गाढ़ी कमाई और बुढ़ापे के सहारे को जो है बैंकों के माध्यम से डूबता दिख रहा है और आगे भी डूबने के पूर्ण आसार नजर आ रहे हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जनहित व राष्ट्रहित में वित्त मंत्रालय व केंद्र सरकार से अनुरोध है कि भारतीय रिजर्व बैंक के इन नवीनतम प्रावधानों को वापस लेकर पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट सिस्टम को रिस्टोर करवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डांगे जी। डॉक्टर प्रशांत नंदा जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Bande Utkal Janani. Today is Odisha Day. On this particular day, Odisha. On this particular day, in 1936, my state, Odisha, was declared as a separate state. So let me come to the subject. Sir, you know, these left-wing extremists, they cannot be exterminated through barrels of gun. Sir, the people living there has to be given a chance to develop their socio-economic status. This
is what my government of Odisha has understood and have done in this respect, and much of optimism have been curbed. But there are 11 districts which is of concern. Sir, I would like to put it here. That in order to put those people and support them for socio-economic, to uplift their socio-economic standard, sir, rail connectivity and road connectivity is most important. I am happy that Honorable Rail Minister is here and he'll definitely take action. The government of Odisha has requested the union government for railway connectivity between Malkangiri to Bhadrachalam 150 km and Navrangpur to Junagadh 118 km, which will be immensely helpful for the socio-economic uplift of the tribal populace and also for countering left-wing extremism in the region. The government of India may consider this request of the state government at the earliest, and also the union government has been requested by the state government for railway connectivity between Malkangiri to Bhadrachalam 150 km and Navrangpur to Junagadh 118 km. Regarding road development, sir, the government of Odisha has also requested the union to Motu via Malkangiri length 202 km, which is the lifeline of the western and southern Odisha, providing interstate connectivity to Andhra Pradesh and Chhattisgarh to 4-lane standard. This will boost the socio-economic growth of the region and also help to combat Naxal menace in the NW area. The government of India may consider this request of the state government at the earliest. The government of Odisha has also requested the union government for development of the stretch of NH 326 time is over. from Time is over, Maniya Prakash Nanda ji. Time is over. It's not going on record now. Thank you. बहुत बहुत बधाई आपको उड़ीसा दिवस पर और आपके माध्यम से पूरे उड़ीसा वासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। माननीय श्री रामचंद्र झांगरा जी। धन्यवाद मान्यवर। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का मुझे मौका दिया है। मान्यवर, पिछले सदियों पहले गांव में जो किसान काम करने वाले, कृषि का काम करने वाले होते थे, उनको ग्रामीण कारीगर दूसरे गांव से भी लाके बसाने पड़ते थे। वो चाहे लोहे का काम हो, चाहे लकड़ी का काम हो, और यहाँ तक पशु उठाने, चमड़ा उतारने का काम हो, अगर गांव में नहीं होते तो दूसरे गांव से लाके बसाने पड़ते थे। उनको कृषि योग्य भूमि भी दी जाती थी और रिहायशी भूमि भी समलात भूमि में से दे दी जाती थी। अब समय के साथ साथ जैसे मशीनी युग आया तो उनकी उपयोगिता खत्म हो गई और आज वो बहुत ही दबाव का जीवन जी रहे हैं। उनको बेदखली के आदेश दे दिए जाते हैं। अगर गलती से किसी सरपंच की ऐसे की वोट दे दी जो चुनाव हार गया और विरोधी बन गया तो उनके ऊपर बेदखली के आदेश दे दिए जाते हैं कि पंचायत लैंड के ऊपर ये नाजायज बैठे हुए हैं। मैं ऐसे दो एक उदाहरण दूंगा आपको। भिवानी के जरवाई गांव है एक, उसमें एक जांगड़ा परिवार सैकड़ों साल पहले वहां के बसा था।
उसने गलती से दूसरे आदमी की वोट दे दी और वो चुनाव हार गया, तो उसको बेदखली के आदेश दे दिए और उसका घर गिराने के ऑर्डर दे दिए, और वो आदमी शर्म के मारे आत्महत्या कर गया, जो कभी 2 बार गांव का सरपंच रहा था खुद। ऐसा ही उदाहरण कलोसरा गांव है करनाल में, 1618 एकड़ जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, श्यामला जमीन के ऊपर। वहां पर दलित परिवारों के जो जितने भी परिवार हैं, पिछड़े परिवार हैं, पशुओं का गोबर डालने के लिए भी जमीन नहीं है, उनको अपने पशु बेचने पड़े, वो दूध का काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। इसी तरह से महेंद्रगढ़ में एक खटीक समाज का परिवार आके बसा, उनको चमड़ा उतारने का, पशु उठाने का काम दिया था। अब महेंद्रगढ़ शहर का विकास हो गया, वो जमीन प्राइम लैंड होगी, कॉलेज के सामने आ गई, तो भूमाफियों ने आदेश कर दिया कि ये सरकारी जमीन पर बैठे हैं, और आदेश करवा दिया सरकार के इनको यहां से उठाया जाए। अब हिंदुस्तान में उनके पास कहीं एक गज जगह नहीं है, वो जाके बसेंगे कहां? तो महोदय, ये एक ऐसा विषय है, इसके कारण ना तो अंत्योदय का सपना साकार हो रहा और पीएमएवाई का सपना भी साकार नहीं हो रहा, क्योंकि जब उनके गरीबों के लिए जगह मांगी जाती है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाएं, तो कह दिया जाता है पंचायत के पास लैंड नहीं है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है, मैं हरियाणा के उदाहरण दे रहा हूं, और इस ओर सरकार ध्यान दे और गरीबों को बचाए और भूमियों और जो दबंग बैठे हैं उनसे जमीनों की मुक्ति करवाई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद झांगड़ा जी। इस उच्च सदन में अनेक प्रतिभाएं कला संगीत से संपन्न हैं, उनमें से झांगड़ा जी भी हैं। डॉक्टर अमर पटनायक जी, डॉक्टर अमर पटनायक जी, प्लीज। Thank you, Chairman, sir. So once again, on behalf of the people of Orissa, I extend my warm greetings to you, sir, to the chair, and to all the members of the House, and wish them well, sir. हम सबकी भी बधाई। Thank you, sir. Sir, my submission today is on the Safai Karmachari and sanitary workers, and I'll speak in Oriya, sir. सर आम देशर परिमल व्यवस्था को सजाड़े मेहनतर बा परिमल एवं सफाई कर्मचारी भूमिका अतुलनीय, किंतु सेमानंकर उन्नति पाई सरकार पक्षरु सेभली किछि आखिदृश्य पदक्षेप निया जाय नै। 2018 मसीह रे एक सर्वेक्षण अनुसार मोट 63,063 मेहनतर चिन्हट होइछन्ति, तेबे सेमानंक मध्यरु मात्र 13,990 जन को गोटे थर आर्थिक सहायता प्रदान करा जायछि। 2,532 जन को दक्षता विकास तालीम प्रदान करा जायछि। परिमल कर्मचारी उन्नति एवं थैतान पाई आत्मनिर्भर प्रकल्प अधीन आत्मनिर्भर योजना जरिया मात्र 30 जन को मूल पुंजी उपर सब्सिडी जोगाई दि जाइतिला। काम अभाव पाखापाखि 50,000 परिमल कर्मचारी सेमानंकर राज्य छाड़िछन्ति। महामारी कोरोना कारणरू सेमानंक आर्थिक स्थिति आहुरी दुर्बल होई पड़िछि। फलरे प्रवासी श्रमिकों समस्या भली 2020 रे परिमल कर्मचारी संख्या मध्य वृद्धि पाइछि। सरकारंकर पाखरे ए नै कोनोसी निर्दिष्ट तथ्य नथिबा बेले सेमानंक संख्या एबे 50,000 पारी हो जाइथिबा अनुमान करा जाउछि। मेहनतर एवं परिमल कर्मचारी माने एक विपदजनक वृद्धि रे नियोजित थिला बेले सरकारंक पक्षरु सेमानंक पई स्वास्थ्य बीमा एवं पर्यायक्रमे सेमानंक सह तांको परिवार रो स्वास्थ्य जनित करा जिबा बाध्यतामूलक। एही क्षेत्र रे सरकारंकर कोनोसी भी पदक्षेप नै नांती, किंतु अनेक राज्य सरकार एभली योजना उपर कार्य आरंभ करिसेंती। एहार एक श्रेष्ठ उदाहरण है ओडिशा। सर ओडिशा सरकार गारिमा नाम एक योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना रे लक्ष्य है परिमल कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा पर्यायक्रमे सेमानक स्वास्थ्य जांच सह सामाजिक निरापत्ता जोगाई देबा। तेणु मु केंद्र सरकार पाखरे अनुरोध करुची कि पुनः सर्वेक्षण करा जाई परिमल कर्मचारी उन्नति एवं थैथान पाई आत्मनिर्भर प्रकल्प अधीन आत्मनिर्भर योजना परिसर वृद्धि करने सह सेमानंकु स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा उपरे गुरुत्व दिया जिबा आवश्यक। धन्यवाद। थैंक यू। श्री जीवीएल नरसिम्हा राव। Thank you, Vice Chairman, sir, and also Honorable Chairman for this opportunity, sir. And at the outset, I'd like to extend my best wishes to all the retiring members. But listening to them yesterday, a thought crossed my mind. 1/3 of members of this August House retire every 2 years. And besides a good standing in public life, they have rich parliamentary experience, subject knowledge, and the experience of working with the communities and societies. And I was wondering, why don't we have a very powerful alumni association, sir? Because schools and colleges where we have spent only 4 years, we have a lifelong bonding with such organizations and institutions becoming members of the alumni. So, sir, in India, we also have an Indian parliamentary group
of which we are all life members. Retired members become associate life members, sir. But having gone through the mandate of this IPG, I realized that it is more oriented towards the sitting members of Parliament and not for the retiring members. Therefore, sir, I have looked at the arrangements in other countries. Sir, in most Western democracies, they have a very strong association of former members of Parliament. They have it in the US, which was set up in '84. They have something, the UK Parliament has an association of former members with an office in the House of Commons itself. Australia has it, European Association of Former Members. All these institutions certainly provide an opportunity for the former members of Parliament to participate in, actively participate in public life, sir. Honorable Prime Minister has been exhorting all the citizens of this country to participate in nation building efforts in the 75th year of independence. I would like to urge you, sir, and also the government to enable a constitution of an institution, an association of former members of Parliament as an alumni institutions with no cost to the exchequer, which is what in most countries it only has a recognition of the Parliament but no cost to the exchequer, which can organize an annual meeting of all the former members. It can also organize regional meetings in different regions of this country. It can also undertake study tours and also voluntarily participate in certain nation building activities undertaken by the government. So I would like to strongly urge the government to take such an initiative, sir, and I would request all the colleague members to support such an effort, because it will give us an umbilical connection to the House of Parliament and also will enable us to contribute in a channelized way. Thank you, sir. एसोसिएट करने वाले सभी माननीय सदस्य अपना नाम कृपया यहाँ भेज दें। माननीय श्री संभाजी छत्रपति, माननीय श्री संभाजी छत्रपति, नॉट प्रेजेंट। नाउ स्पेशल मेंशंस, प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया उपसभापति महोदय, इस विशेष उल्लेख के लिए अनुमति और सहमति देने के पश्चात मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, वो है पूर्णिया स्थित जूट एवं बनाना फाइबर क्लस्टर को सहायता देने की मांग। एमएसएमई मंत्रालय ने स्फूर्ति स्कीम के तहत परंपरागत रूप से विलुप्त हो रहे दस्तकारी और अन्य पारंपरिक कला से जुड़े कारीगरों को आगे बढ़ाने हेतु देश भर में कई क्लस्टर का निर्माण किया, जिनमें से एक बिहार के पूर्णिया स्थित जूट एवं बनाना फाइबर क्लस्टर, जो देश का सबसे बड़ा क्लस्टर है। इतने बड़े क्लस्टर को चलाने वाली एजेंसी को सरकार के द्वारा मुफ्त जमीन उपलब्ध करवाना चाहिए। परियोजना में नए मशीनों को जोड़ने एवं वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। स्थानीय प्रशासन, राज्य एवं केंद्र सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाए कि इन कारीगरों के उत्पादों को सीधे क्लस्टर के माध्यम से अनिवार्य रूप से खरीद हो, ताकि अन्य लोग भी आकर्षित हो सकें। क्लस्टर के संचालक एजेंसी को बाजार में से ज्यादा उत्पाद लाने हेतु 5 करोड़ तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था हो, ताकि निर्बाध रूप से उत्पाद बनाए जा सके। CSR स्कीम को क्लस्टर से जोड़कर इस स्कीम की कम से कम 40% राशि इन क्लस्टर के कारीगरों को व्यवसाय के एक्सटेंशन के लिए मिलनी चाहिए। इन सभी कारीगरों को 5 लाख जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिले। क्लस्टर को जिला मुख्यालय में कम से कम 5 एकड़ सरकारी जमीन मुहैया कराया जाए और अर्बन हाट स्कीम के तहत क्लस्टर को इसे बनाने और संचालन की जिम्मेवारी मिले, ताकि कारीगरों का अपना बाजार हो और उसमें किसानों के जैविक उत्पादों की भी बिक्री हो। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मनोज जी। माननीय श्री प्रसन्न आचार्य जी। सर, स्पेशल मेंशन। थैंक यू सर। स्पेशल मेंशन। Sir, the state of Odisha is very rich in minerals, but still has underdeveloped region like the KBK. In very close proximity of the world-famous Hirakud Dam, the first engineering college of the state, that is the UCE Burla, was set up in 1956, and presently it has been a state unitary technical university named as VSSUT Burla since 2009, and has UGC recognition of 2F and 12F.
The present student strength is 5,000 plus, and the top rankers of the state are preferring this university. It offers 11 UG courses, 34 PG courses, and 16 PhD programs. It has produced 30,000 plus alumni who are serving the nation and abroad in responsible positions. Sir, the institute is within the vicinity of industrial belt, mines, and other institutes of higher learning like Sambalpur University, Medical College, IIM, IIT, and NIT, and Agricultural University. It is well connected by road, rail, and air. The university has a total land of 500 acres and has a scope to become a multidisciplinary engineering research institute and mandated in the new education policy 2020. Many a time we have approached the MOE to upgrade it to a CFTI, and Government of Odisha has also recommended for the same. Under these circumstances, I request the central government to consider upgrading Bishut Burla to a CFTI in line with the Central Institute of Technology, Kokrajhar in Assam, to act as a catalyst to the socio-economic and overall development of the 17 underdeveloped districts of Western Odisha. Thank you, sir. धन्यवाद प्रसन्न जी। माननीय श्री अनिल देसाई जी, माननीय अनिल देसाई जी नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री संजय सेठ जी। उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाकर बांग्लादेश की तर्ज पर इंसेंटिव देकर निवेशकों को बुलाना। माननीय सभापति जी, आज हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है। 140 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों को डायरेक्टली और 6 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार उपलब्ध कराती है। आज ये इंडस्ट्री भारत की कुल जीडीपी का 2.3% कंट्रीब्यूट करती है। हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 13% टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही करती है और भारत के कुल एक्सपोर्ट में इसकी 12% की हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एशियन देशों के साथ फ्री ट्रेड भी अलाउ किया गया है और साथ ही सरकार ने SFITP और TUFS में भी काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रही है। इन सब के बावजूद भी आज बांग्लादेश हमसे आगे है, जबकि उससे अपार संभावनाएं हमारे यहाँ है। रॉ मटेरियल की उपलब्धता और मायने रखती है और इस मामले में भारत एक बहुत मजबूत स्थिति में है। पूरी दुनिया में भारत कॉटन और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाकर बांग्लादेश की तर्ज पर इंसेंटिव देकर निवेशकों को बुलाना चाहिए। पूर्वांचल में हमारे पास स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की पर्याप्त अवेलेबिलिटी है। घरेलू और निर्यात के लिए पूर्वोत्तर राज्य की भौगोलिक लोकेशन सबसे अच्छी है, जिसमें माल के आयात और निर्यात करने में सहूलियत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 2025 तक देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन करने का है। उसको हकीकत में साकार करने में बड़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद संजय सेठ जी। ऑनरेबल श्री इलाम मारम करीम जी। Thank you, Deputy Chairman. Sir, the Union Cabinet had approved the closure of Kota Unit of Instrumentation Limited in 2016 and had accorded in principle approval for the transfer of its Palakkad unit in Kerala of Instrumentation Limited to the Government of Kerala. The Government of Kerala had constituted a high-level committee headed by Chief Secretary of the Government of Kerala to work out the modalities of transfer. Department of Heavy Industry was represented on the committee. Based on its deliberations, a tripartite memorandum of understanding was signed by the Government of India, Department of Heavy Industry, Government of Kerala, Department of Industry in the Instrumentation Limited on 16th November 2018. There is no visible progress in this matter till date. The whole transfer process is suspended due to the objection raised by Department of Heavy Industries for levying the value of the land in possession of Instrumentation Limited Palakkad unit. It may be noted that this land in possession of Instrumentation unit was given by the Government of Kerala at free of cost for establishing this industrial unit in the state.
So it is quite unfortunate that the central government is asking the value of the land from Kerala government for transferring it. So the heavy industries department should change its stand to levy the value of the land from Kerala government. In this scenario, I request the union government to do the needful for completing the transfer of Instrumentation Limited Palakkad unit to Kerala government at the earliest. Thank you, sir. धन्यवाद करें। माननीय श्री कैलाश सोनी जी। माननीय उपसभापति जी, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एम्स प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में, मान्यवर मध्य प्रदेश बड़ा प्रदेश है, इसमें महाकौशल एवं विंध्य प्रदेश बहुत बड़ी संख्या में जहां अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवास करते हैं। महाकौशल पुराना गोंडवाना है, इसमें 8 जिले हैं। इसी तरह विंध्य प्रदेश में 7 जिले हैं, सागर संभाग में 6 जिले हैं। यहाँ श्रेष्ठ चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। सभी को क्षेत्रीय सुविधा संतुलन की दृष्टि से मध्य में जबलपुर पड़ता है। लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ एम्स की व्यवस्था प्रारंभ किया जाना लोकहित की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। आपके माध्यम से भारत सरकार से अपेक्षा करता हूँ, जबलपुर में जो संभाग की कमिश्नरी भी है, वहाँ एम्स की सुविधा शीघ्र प्रारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री मुजीबुल्लाह खान जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। महोदय, इस सदन में झारखंड में निवास करने वाले कुछ आदिवासी समुदाय को ट्राइबल लिस्ट में शामिल करने के लिए माननीय मंत्री जी ने एक बिल पेश किया है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ झारखंड में ही रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी कहलाने के योग्य हैं और इसी समुदाय के लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो क्यों नहीं? आपकी जबकि इसी समुदाय के लोग का एक दूसरे से आपस में संबंध और शादी होता है, तो फिर इन लोगों को लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया? मैं सदन के माध्यम से सरकार के आग्रह करना चाहता हूं कि उड़ीसा के झारखंड के सीमा में रहने वाले गांवों में पूरन भंजो, भंजो पुराण, तुमड़ा पुराण समुदाय के लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए सरकार कदम उठाए। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। माननीय श्री वी विजयसाई रेड्डी। Thank you, Deputy Chairman, sir. My special mention is about the need to provide special financial package for handloom sector. Sir, the handloom sector is a crucial source of income with 21 lakh households deriving livelihood from it. It is also a symbol of empowerment for 87% of the handloom households are rural, 72% of the handloom workers are women, and 68% of the handloom workers are SC, ST and OBC, sir. But due to pandemic, the handloom sector has been facing fall in the demand, increase in unsold stocks and halt in production. This has badly affected the handloom weavers who have been unable to find work and support their families. The two factors have contributed to this financial crisis in the handloom sector. First, in the period between March 2020 and January 2022, the price of cotton and silk yarn has increased by 69% since raw materials like yarn are not available at reasonable prices. Weaving has become financially unviable. Second, in the entire duration of pandemic, no specific social security benefits have been announced for protection of poor and vulnerable weavers. The handloom sector needs immediate financial assistance to boost its revival. Hence, I urge upon the government to provide special package of 25,000 crores for handloom industry, including subsidized yarn materials and social security measures for weavers, sir. Thank you very much. Thank you. Dr. V. Siudasan ji. Chair, sir, my special mention is proactive measures to
measures are required to address the digital divide for ensuring universal access to online education. In this modern period, the digital devices are the essential instrument for education, but millions of students are unable to use it because of their social and economic backwardness. In rural and Adivasi areas, huge number of schools are running without electricity. If electricity is not there, how can they use computer and other digital devices? The ISER 2021 report says that 74% of the children in India are does not have the access to smartphone, and the percentage is even worse in the states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, which is below 20%. This is the state reality of rich-poor divide in the country. In Kerala, the government announced internet as a universal right and has initiated the Carephone project to ensure internet to everyone. It is a duty of the union government to ensure that every Indian should have access to free internet. The public sector companies like the BSNL has a great role to play here. The PSUs should be supported and government should use it as a tool to deliver free or subsidized broadband connection to poor families, which is also very essential for ensuring access to information. Thank you, sir. This is my special mention. माननीय श्री अबीर रंजन विश्वास जी. Sir, my special mention is on access to reliable electricity for rural households. Sir, India's electricity access challenge is formidable. About 300 million people lack electricity, while an additional 100 million have less than 4 hours of electricity per day, and possibly several millions more suffer from unreliable supply of poor supply, and which leads to low interest among rural consumers, which further leads to low returns or revenues for DISCOMs, forming a vicious cycle. Decentralized renewable energy, which is usually small scale and generated close to the point of use, benefits entire households in many ways, maximizing the impact of clean energy. In general, rural electrification is costlier than urban electrification due to high infrastructural, servicing and billing costs arising from low population density and low industrial or commercial needs. Additionally, decentralized renewables have immense potential for creating jobs, empowering entrepreneurship and enhancing livelihood opportunities for the rural communities. Adoption of local climate-friendly clean energy solutions can also help address the ongoing challenges of reliability, quality and affordability of energy in rural areas. Interventions such as large-scale adoption of decentralized renewable energy can make clean energy accessible to all while also meeting climate commitments. Supply-side concerns necessitate streamlined technology and policy pushes, whilst demand-side concerns can be addressed by focused interventions such as capacity building and facilitating access to funding. Empowering women who are often involved in agricultural activities with clean energy generation at the village level can truly improve energy access and advance livelihoods. I urge the government to take necessary steps in this regard. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री राम विचार नेताम जी. धन्यवाद महोदय. छत्तीसगढ़